ताकत हमेशा डंडे के जोर पर नहीं चलती। चॉम्स्की अपनी किताब मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट में लिखता है दैट इवन आवर चॉइसेस एंड आवर कंसेंट इज क्रिएटेड। इफ लव टुडे feels freer and emancipatory, then why does it produce gender inequality, constraints, emotional exhaustion, and quiet forms of सवाल ये है कि what is love? तो आजकल जैसे हम ये डेटिंग कल्चर देखते हैं where couples go out on fancy dates, they buy extravagant things, they do everyday new thing for each other, and this is what we have normalized in the form of love. Hi, I'm Shazeen Saeed. बहुत कर ली हमने सियासी बातें। टुडे लेट्स टॉक अबाउट लव। तो सवाल ये है कि व्हाट इज लव? इंटीमेसी, रिलेशनशिप्स, शादी या फिर कंट्रोल? तो आज हम डिस्कस करेंगे द बिगेस्ट एनिग्मा ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आज तक इंसानी तारीख में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ who didn't love someone either platonically or romantically. So today we will dissect the concept of love, but in a very critical way. हमारा ख्याल है कि love is a place where you are supposed to be real, authentic and your true self. और हम consider करते हैं कि love is part of your personal life. We think of it in a very post-materialistic way. एक ऐसी चीज जिसका सियासत से, social dynamics से या क्लास से कोई लेना देना नहीं. Something which cannot be theorized. And yet this belief is exactly what makes love a site of exploitation or power. I think the more something feels natural and private, the less we question its roots and nature. हम अपने इर्द गिर्द हजारों लोगों को हर रोज प्यार और मोहब्बत के दावे करते हुए देखते हैं और हर शख्स कहता है कि उसका प्यार सबसे सच्चा है। पर यहाँ पर हमें एक बात समझने की जरूरत है that love is never just emotional. It is social, political and historical. The way we love is learned and the way we desire is shaped. इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब देंगे that if love today feels freer and emancipatory, then why does it produce gender inequality, constraints, emotional exhaustion and quiet forms of control? तो आज के हमारे माशरे में love does not remain an act of merely two people meeting and staying with each other and connecting with each other. It is rather micro projection of macro structures that exist in our society. The structures which reinforce inequality and injustice. Love today feels more expressive, but it is politically hollow. Our central claim in this video is that modern love operates within a system of managed freedom. Capitalism intimacy को suppress नहीं करती, it rather manages it to its own benefit. चूंकि हम structures की base पर attack कर रहे हैं, it might imply that we are postmodernists. But यहाँ पर ये बताना जरूरी है that we are not. We are using a postmodernist approach to analyze how power operates through norms, discourse, and identities. We are not here to preach you postmodernism because it weakens our very ability to resist the same power that it helped recognize. Postmodernism dissolves shared moral language, collective goals, and principles. It attacks all those values which are necessary to ignite any movement. देखिए, postmodernism emerge हुई as a critique of domination. ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स को और ऑब्जेक्टिविटी को चैलेंज करता है। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्निज्म कैपिटलिज्म को क्रिटिक करता है तो दिस स्केप्टिसिज्म बिकम्स यूजफुल इन अनएक्सपेक्टेड वेज। हम जानते हैं कि कैपिटलिज्म वर्क्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, रीइन्वेंशन एंड डिफरेंसेस विदाउट डिसरप्शन। यानी आप बंद कमरों में बैठकर इन मेगा स्ट्रक्चर्स को क्रिटिक तो कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रैग्मेटिक अचीव नहीं कर सकते। वो जैसे इकबाल कहता है कि गुफ्तार के गाजी तो बन सकते हैं लेकिन किरदार का गाजी नहीं बन सकता कोई। When truth becomes relative and ethics become personal, then critique becomes individualized and resistance becomes an adventure. This is not because postmodernist thinkers were working with capitalism or they wanted this outcome. It is because capitalism is so adaptive that it restructures itself before critique could organize itself. तो इन हालात में love becomes politically thin. We can choose endlessly, but we cannot challenge or disrupt those structures which are shaping these choices. जैसे नॉम चॉम्स्की अपनी किताब
मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट में लिखता है दैट इवन आवर चॉइसेस एंड आवर कंसेंट इज क्रिएटेड। तो आजकल जैसे हम ये डेटिंग कल्चर देखते हैं वेयर couples go out on fancy dates, they buy extravagant things, they do everyday new thing for each other, and this is what we have normalized in the form of love. But is it what we really want, or is it just market conditions that we are adapting, and eventually we are benefiting capitalism through all of this love fiasco? मिशेल फूको अपनी किताब डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में लिखता है कि ताकत हमेशा डंडे के जोर पर नहीं चलती but through rhetoric. So power for Foucault is not simply imposed, it is rather seen in the form of norms, cultural identities, and forms of self-understanding. तो फूको का मानना है दैट पावर इज एवरीवेयर, इट इज omnipotent. चूंकि पावर हर तरफ एग्जिस्ट करती है एंड पीपल डू नॉट जस्ट ओबे पावर, वो उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन रिलेशनशिप्स. You do not force individuals into following certain gender roles. They voluntarily adopt those gender roles and they do self-policing. You ask certain questions that if you are a desirable partner or emotionally appropriate. This self-surveillance feels personal, but rather it is political. बचपन से we internalize scripts about love, romance, or relationships, or who we should love, how much we should love, how much sacrifice should we make, or what emotional gestures are valid in a relationship. मार्क्यूजे अपनी किताब वन डायमेंशनल मैन में एक थ्योरी देता है, रिप्रेसिव डिसब्लिमेशन. वो कहता है कि एडवांस्ड कैपिटलिज्म आपके प्लेजर्स और डिजायर्स को बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनको केयरफुली क्यूरेट करता है. इट न्यूट्रलाइजेज सोशल क्रिटिसिज्म एंड रेडिकल इम्पल्सेस बाय परमिटिंग इमीडिएट कंट्रोल्ड ग्रेटिफिकेशन. यानी प्लेजर उस वक्त तक परमिटेड है जब तक इट इज कंपैटिबल विद productivity, consumption, or market. This is exactly how dating culture, relationships, or situationships around us work. Intimacy is becoming emotional labor and dating apps quantify attraction. यानी आप dating apps पे जब right या left swipe कर रहे होते हैं तो you're choosing like a businessman. You're choosing a partner कि कौन आपको कितना फायदा दे सकता है. Relationships are now evaluated through emotional return, outcome, effort. Wait, isn't this the same language that we use in business deals? यानी कि love survives only after it has learned obedience of market, gender disparity, and neoliberalism. Sorry to break it to you, but the notion of love that we see today is nothing but an illusion of market gain, competition, and a game of input and output. लोगों का मानना था that love is the unmediated way of truth, but that sort of love does not exist anymore. Love should be much more than two people meeting and staying or connecting with each other. It should be an act of resistance. It should break the norms. Love should be an act of resistance. It should break the norms and create critical consciousness that goes beyond form. In love, you create one another.